Good morning, friends. Welcome back to my channel. This is Riya here. Do consider subscribing my channel क्योंकि मैं बहुत ही बजट में वीडियोस बनाती हूँ. आप बोल सकते हो कि ज़ीरो बजट के साथ भी मैं वीडियोस बनाती हूँ. मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, वीडियोस थोड़ा सा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने बजट में बनाती हूँ वीडियोस. और रुकिए, कोई है डोर पे? अरे ये तो बूजो है. एनीवेज, सो हमने स्टार्ट कर दिया है मेकओवर. तो चलिए, और मेरे हबी हैं आज जो मुझे हेल्प करने वाले हैं. आप हमेशा बोलते हो कि आप क्यों अकेले वार्डरोब हटा रहे हो, क्यों कर रहे हो अकेले. बेसिकली मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो मुझे ही हमेशा अकेले काम करना पड़ता है. और फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि खुद करना, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट से और मेरे हबी का छुट्टी है क्योंकि संडे है, तो उनको मैंने बोला है वो मुझे हेल्प कर दे आके. तो ही इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प. तो लग चुके हैं मेरे साथ हेल्प पे. चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कि मैंने किस तरह से इसे नया लुक्स दिया है.
हैं 7 और मैं जा रही हूँ कुछ होम डेकर आइटम्स खरीदने के लिए। मुझे लग रहा है कि कुछ मेकओवर्स के लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है जो और एनहांस कर देगा मेरे बेडरूम लुक को। तो मैं भी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। चलिए मेरे साथ शॉपिंग। मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहे सुबह के 9 और ब्रेकफास्ट हो चुका है आप लोगों का। मेरा तो हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने कल शॉपिंग किया है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई कल, कुछ इमरजेंसी था तो रिटर्न आना पड़ा। तो जितना भी जो कुछ भी मैंने किया है मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और एक लैम्प शेड मैंने लिया है इस बेड साइड टेबल के लिए, क्योंकि एक लैम्प शेड मेरे पास है और ये दूसरा वाला जो था ना ये अनफॉर्चुनेटली टूट गया। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है लेकिन ये टूट गया था। तो बिल्कुल वही टेराकोटा पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने एक और टेराकोटा लैम्प शेड खरीदा है जो मेरे रूम के थीम से मैच करता है। येलो एंड ऑरेंज है और बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट मैंने कुछ छोटा छोटा सा प्यारा प्लांटर्स खरीदा है और इसका प्राइस है 85 रुपीज़ ओनली। बहुत ही क्यूट है प्लांटर और दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए येलो कलर में डॉटेड है, फिर अगेन येलो क्योंकि ये मेरे रूम के थीम से मैच करता है, सो इसे लिया है मैंने। प्लांटर ख़रीदा है तो ये भी 85 रुपीज़ का है। ये नेवी ब्लू पैटर्न है, बहुत प्यारा एंड ब्राइट कलर है। जैसे कि आप सबको पता है मुझे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। सो ये प्लांटर और ये इसके साथ ये प्लेट भी मैंने ख़रीदा है। ये ओनली 25 रुपीज़ प्राइस है इसका। सो ये दोनों मैंने ख़रीदा है। बहुत क्यूट दिख रहा है, इसमें जो ये डिज़ाइन किया हुआ है ये मुझे बहुत। चलिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ लैम्प शेड का जो स्टैंड है। आई होप एक हाथ से मैं निकाल सकूँ। सॉरी फॉर द शेकीनेस बट यस, दिस इज़ द लैम्प शेड। से रखते हैं, ये देखिए एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट टेराकोटा, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये जो हैंड पेंटेड किया हुआ है इसे, इसकी खासियत ये है कि ये हैंड पेंटेड है और मुझे हैंड पेंटेड हैंडलूम का सामान बहुत पसंद है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? इसके ऊपर ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से। और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा है जैसे कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड कुछ दिखाने के लिए और एक बल्ब जो लैम्प। चलिए इसी से अभी जो है उसी से डेकोरेट कर लेते हैं। Star attraction. So I'm going to put this Buddha painting that I got from Amazon, and I hope you all have watched my video. If not, the description, the link will be given in the description box down below. So I've purchased a lot more things from Amazon. Just go and check it out. So this will be placed in this empty wall. Isn't this wall looking so much of empty? So here I'll place this Buddha painting. Let's.
Thanks for watching. I hope you got some ideas from this simple but cute and elegant makeover of my bedroom. Do subscribe my channel. Also hit that like button, comment and share. Till then, keep decorating. Bye bye.